Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. Session is all about pointers and arrays. And पिछले दो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया what is the need of array, how to go on declaring array, उसके क्या क्या issues हैं. Then next session में हम लोगों ने डिस्कस किया what are the three different ways of initialization of array elements and what are the different ways of using of array elements. So ये पूरा जो basics हम लोगों ने array का देखा उसको पहले समराइज करते हैं. एंड इन समराइजेशन व्हाट वी डू नो अबाउट द अरेज, it's a collection of similar type of elements spanned across contiguous memory allocation. Next to that, static allocation means compiler must know the size of the array elements in the beginning. Next to that, index is always ranging from 0 to n minus 1 for n number of elements into the arrays. And next to that, if array is not initialized with the specific values, then it is going to hold what? Garbage values. And next one is bound checking is the responsibility of the programmer. आपको compiler रोकेगा नहीं if you are violating the bounds. What are the bounds? Bounds will always starts with 0 and the last entity, that is upper bound, will always be n minus 1. So ये important points को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे and we are going to work on to the next aspect is कि पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग अरेज को कैसे हैंडल करेंगे. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड इज पॉइंटर का अरिथमेटिक. सो व्हाट आर द डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, ये पहले स्टडी करेंगे. एंड फिर उन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करके पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग अरे को ट्रैवर्स करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट पॉइंटर अरिथमेटिक इनटू दिस सेशन. So I'm back into the VS Code and यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे what are the different arithmetic operations that can be done with the help of pointers. कोड के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये 100% क्रिस्टल क्लियर हो. So what I'm going to do in this case is अपना जो pointers in CCPP workspace है उसमें एक नया फाइल बनाएंगे. Let us say arithmetic.c and यहाँ पे form.c का content I'll just copy it into this, right? Okay, and then इसको minimize करते हैं and now I'm ready for working across what are the different arithmetic operations that we can do with the help of what? Pointers, right? Now जब भी हम लोग arithmetic operations का बात करते हैं तो we know that there are certain arithmetic operators and those are plus, minus, multiplication, division and programming में आता है और एक चीज that is remainder operator, right? Okay, so multiplication, division and remainder, these are counterparts of each other and plus and minus are the counterparts of each other, right? Okay, so पहले ये चेक करना है कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं out of this 5 operations with respect to the pointer variable. So let's go one by one checking across कि कौन कौन से operations are feasible with pointer. वो अगर हो रहे तो क्यों हो रहे and वो अगर नहीं हो रहे तो what is the reason behind that, right? So let's move into the detailings about pointer arithmetic. So यहाँ पे what I'm going to do is let us go with integer a is equal to 10. बहुत ही simple aspects. Next is integer star ptr1 and यहाँ पे what I'm going to do is ptr1 is equal to address of a, right? This is very clean and clear code up to this. मैंने integer variable का address integer pointer में move कर दिया, right? अभी मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूं. ptr1 is equal to ptr1 multiplied by 10, right? Okay, and the moment I am trying to do this, the compiler is showing one error over here, right? Okay, so let me show you by executing this code कि क्या error issues है. So after execution of this, it says that error invalid operands to the binary multiplication. मतलब multiplication जो binary operator है उसके साथ you cannot go with pointers के ऊपर multiplication operation. अभी इसका reason क्या है? For example, we know the basic memory architecture that we have studied in the beginning of this series. For example, अपने पास ये memory है and this memory you assume that this is of 1K memory, right?
सो 1 के मेमोरी में कितने लोकेशंस है? 1024 मेमोरी लोकेशंस है, ऐसा जूम करते हैं। सो शुरू का मेमोरी लोकेशन 0 में डेसिमल को यूज कर रहा हूं ताकि अपना कैलकुलेशंस बहुत इजी हो। सो लास्ट मेमोरी लोकेशन कैन बी 1023, राइट? ओके, एंड आप ऐसे जूम करो कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे कहीं जाके इसका एड्रेस है लेट अस से 314 कुछ एड्रेस है, एंड वहां पे द वैल्यू 10 इज स्टोर्ड एंड द नेम गिवन टू दिस मेमोरी लोकेशन इज 8, राइट? नाउ द मोमेंट आप इसका एड्रेस कहां पे मूव कर रहे हो? ptr1 में। सो ptr1 में आई एम होल्डिंग द एड्रेस ऑफ दिस a एंड द एड्रेस इज व्हाट? 314। अभी उसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन बाय 10 कर रहे हैं। सो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 3140, एंड if you observe this value, it goes beyond the range of this memory, right? So straight forward in C and C++ आप pointers के ऊपर multiplication operation नहीं कर सकते because there is quite a good chance that pointer का value may go beyond the range of the memory, right? So अगर multiplication नहीं कर पा रहे तो इसके counterparts, that is division as well as mod operations, also you cannot do with the pointers. So one thing is very clean and clear with the help of this piece of code is multiplication cannot be done on what? Pointers. और 2 pointers का multiplication भी हम लोग नहीं कर सकते, right? Okay, now let's think about addition, subtraction and 2 pointer का addition as well as subtractions के बारे में. So यहाँ पे now I'll go over here and what I'm going to do is यहाँ पे और एक पॉइंटर मैं यूज कर रहा हूं, लेट अस से दैट इंटीजर स्टार ptr2, राइट? ओके, एंड इस ptr2 में आई एम गोइंग टू मूव एज ptr2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ओनली, राइट? एंड देन आई एम सेइंग ptr1 इज इक्वल टू ptr1 multiplied by ptr2, right? Okay, and immediately it shows me the error with respect to ptr1 multiplication by ptr2. So multiplication, दो pointer का multiplication as well as multiplication with arbitrary values on pointer is not allowed. And as multiplication is not allowed, उसके जो counterparts है, that is division and mod operations, those are also not allowed to be performed on what? Pointers. So one rule is very clean and clear. Multiplication, division and mod operations not possible with respect to what? Pointers. So let's go on checking हम लोग addition and subtraction कर सकते हैं या नहीं, right? Okay, so what I'm going to do in this case is मैं plus को use कर रहा हूँ, right? Okay, and in this case if I try to run the code, let's go on checking कि दो pointers का addition हम लोग कर सकते हैं या नहीं. It says again there is a error, आप दो pointers को add नहीं कर सकते. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पॉइंटर्स के थ्रू अरे को हैंडल करेंगे, स्ट्रिंग्स को हैंडल करेंगे, स्ट्रक्चर को हैंडल करेंगे, फंक्शन पॉइंटर्स को मैनेज करेंगे, तो उस केस में आपको इसका एप्लीकेशन दिखाई देगा, राइट? बेसिकली देयर इज नो नीड ऑफ एडिशन ऑफ 2 पॉइंटर्स. आप दो पॉइंटर्स को ऐड करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, राइट? सो इस केस में भी यू कुड बी एबल टू फाइंड दैट दो पॉइंटर्स का हम लोग एडिशन नहीं कर सकते. सो देन व्हाट आर द डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट वी कैन डू ऑन द पॉइंटर्स? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. सो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? नाउ प्लीज ऑब्जर्व pointer ptr1 plus 2, can I do this? Definitely yes, and now my code is error free, right? So हम लोग pointers में कुछ arbitrary values को add कर सकते हैं as well as we can go on doing subtraction across this. Please observe ptr2 is equal to ptr2 minus 2, right? Okay, both of them are allowed. So what is the rule is pointers में हम लोग कुछ arbitrary values को add कर सकते हैं, कुछ values को decrement मतलब minus कर सकते हैं, right? Now इसका एप्लीकेशन डोमेन कहां पे है ये तो बाद में देखेंगे, राइट? बट लेट अस गो ऑन वर्किंग अक्रॉस addition and subtraction with some arbitrary values across the different set of pointers, right? So what I'm going to do over here is अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है. प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, राइट? ओके, अब तक के डिस्कशन में पता चला है पॉइंटर के ऊपर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड ऑपरेशन नहीं हो सकता.
दो पॉइंटर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। सो व्हाट इज कंक्लूडेड अप टू दिस पॉइंटर्स, पॉइंटर में कुछ वैल्यू ऐड हो सकते हैं, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, राइट। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वन वेरिएबल कैरेक्टर ch एंड दिस इज a, एंड यहाँ पे आई गो विथ character star cptr, and यहाँ पे cptr is equal to address of ch, right. Next to that integer I is equal to 1 2, and यहाँ पे integer star iptr, and यहाँ पे iptr is equal to address of what I, right. And one more type of variable float f is equal to let's say 1.23, and यहाँ पे float स्टार fptr, एंड यहाँ पे fptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ f, राइट। ओके, तो ये तो नॉर्मल कोड लिख दिया मैंने, जिस टाइप का पॉइंटर है उसी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस ये होल्ड कर रहा है, राइट। सो कैरेक्टर पॉइंटर स्पेसिफिकली यूज्ड cptr, इंटीजर पॉइंटर iptr, फ्लोट पॉइंटर fptr, एंड और एक वैल्यू भी ले सकते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, डबल डी इज इक्वल टू 1.456, एंड यहाँ पे डबल पॉइंटर यूज करेंगे, डबल स्टार dptr, एंड यहाँ पे dptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ व्हाट d, राइट। ओके, नाउ ये चीज तो पक्का है कि इनमें ये करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस को होल्ड कर रहे हैं, राइट। लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग देयर एड्रेसेस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज प्रिंट एफ, एंड एड्रेसेस को प्रिंट करने के लिए विल बी यूजिंग %u, राइट। ओके, एंड यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ cptr के अंदर का वैल्यू जो कि एक कैरेक्टर का एड्रेस है, राइट। ओके, एंड यहाँ पे लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, रन करके चेक करते हैं। सो यहाँ पे कुछ वैल्यू उसने प्रिंट कर दिया, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू अक्रॉस दिस cptr इज cptr प्लस प्लस किया, एंड देन आई एम डूइंग द थिंग अगेन %u, एंड यहाँ पे cptr, राइट। सो cptr का वैल्यू एक से इंक्रीमेंट कर दिया, एंड अगेन उसका एड्रेस, उसके अंदर जो एड्रेस है ch का, उसको प्रिंट कर दिया। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये क्या इंपैक्ट है एग्जीक्यूशन के ऊपर। सो इट शोज मी द एग्जीक्यूशन दैट 183, लास्ट तीन ही डिजिट में यूज कर रहा हूं, देख रहा हूं 183, उसको एक बार इंक्रीमेंट किया, नेक्स्ट वैल्यू दैट इज देयर इन cptr इज 184, सो वो एक से इंक्रीमेंट हो चुका है, राइट। ओके, नाउ द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर ऑनवर्ड्स। सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये थोड़ा एक सेपरेटर ऐड कर रहा हूं, राइट। ओके, नाउ here I'm just going to copy this and paste it here to check out, right, what is there in iptr, and then iptr को इंक्रीमेंट करेंगे एंड अगेन उसको प्रिंट करेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट। cptr को जब एक से इंक्रीमेंट किया तो पहले 183 था, उसके बाद 184 आ गया, ऐसे कुछ, वो सही में एक से इंक्रीमेंट हो गया। अभी iptr को जब एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एबल टू गेट, प्लीज ऑब्जर्व दिस। And here you could be able to see that cptr is very clean and clear, राइट। पहले 39 था, एक से इंक्रीमेंट कर दिया, अब हो गया 40, राइट। बट ये क्या हुआ, इंटीजर आईपीटीआर में जो एड्रेस था वो था 832, एंड देन आपने उसको एक से इंक्रीमेंट कर दिया, तो नाउ द नेक्स्ट एड्रेस इज 836, वो 4 से बड़ा है, राइट। ओके, नाउ वो क्यों 4 से बड़ा है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट लेट्स चेक आउट टू मोर थिंग दैट इज fptr एज वेल एज dptr, एंड द साथ में डिस्कशन करेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूं, एंड आई विल बी यूजिंग दिस अगेन, एंड दिस टाइम आई विल गो विद fptr, एंड दिस इज ऑल्सो fptr, एंड fptr को भी एक से इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज one more time I'll copy this, and finally we'll go with dptr, dptr को एक से इंक्रीमेंट करेंगे and we'll go with dptr, right। okay, अभी ध्यान से ऑब्जर्व करना है। so here we go with execution of this, and
आई एम एबल टू सी समथिंग लाइक दिस। कैरेक्टर पॉइंटर पहले 11 था, एक से इंक्रीमेंट कर दिया 12 हो गया, राइट। इंटीजर पॉइंटर पहले 504 था, एक से इंक्रीमेंट करने के बाद वो 508 हुआ। फ्लोट पॉइंटर पहले 500 था, एक से इंक्रीमेंट करने के बाद 504 हुआ, फाइन। एंड डबल पॉइंटर पहले 488 था एंड एक से इंक्रीमेंट करने के बाद 496 हुआ, राइट, ओके। तो ये एक से बड़ा है, ये 4 से बड़ा है। फ्लोट पॉइंटर इज आल्सो गेटिंग इंक्रीमेंटेड बाय 4 एज अ वैल्यू एंड ये बड़ा है व्हाट, 8 से। So can you be able to relate it with the help of primary data type? Yes. And in primary data type discussion, we know that character is utilizing 1 byte, integer takes 4 bytes when we are talking about 32-bit environment. Next to that, float takes 4 byte because of single precision and double takes 8 byte because of double precision, right? So जब भी हम लोग पॉइंटर के ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेशंस करते हैं तो ये पॉइंटर ने उसके टाइप का नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करना चाहिए। ध्यान से सुनना है, उसके टाइप के नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करना चाहिए, राइट। सो कैरेक्टर का नेक्स्ट वैल्यू 1 बाइट के बाद है, सो दिस इज डेफिनेटली इंक्रीमेंटिंग बाय 1। बट इंटीजर टाइप का नेक्स्ट वैल्यू कितने बाइट के बाद है, 4 बाइट के बाद है, 4 बाइट अपार्ट है, सो दिस इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड बाय 4। डबल टाइप का नेक्स्ट वैल्यू कितने बाइट के बाद है, 8 बाइट के बाद है, so this pointer when you are incrementing it by 1 it will get incremented by 8। so कंक्लूजन में कह सकते हैं अगर हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 से बढ़ेगा, इंटीजर पॉइंटर 4 से बढ़ेगा, डबल पॉइंटर 8 से बढ़ेगा, फ्लोट पॉइंटर 4 से बढ़ेगा, बिकॉज इट हैज टू पॉइंट टू द नेक्स्ट value of that particular type, right? I hope you understood this, and similar things can happen when you go with CPTR माइनस माइनस। एक से आप जब उसको डिक्रीमेंट करोगे तो डेफिनेटली इट्स सपोज टू पॉइंट टू द वन वैल्यू प्रायर टू दैट एंड वन वैल्यू प्रायर टू दैट विल बी 1 बाइट अपार्ट अगेन। सो वहां पे आप उसको 1 से डिक्रीमेंट होते हुए देखोगे, बट डबल पॉइंटर को आप देखोगे कि 8 से डिक्रीमेंट हो रहा है, right? So these are the operations that we supposed to or we can do with respect to what, pointers। and इन्हीं operations को use करके हम लोग अलग अलग data structures को traverse करेंगे like arrays, strings, structures and all those issues, right? So pointer arithmetic के conclusion में we can say that we cannot perform multiplication, division and mod operations on pointer. We cannot add 2 pointer, we cannot subtract 2 pointer, but we can definitely go on adding some arbitrary values to the pointer, and generally what do we do is pointers को 1 से increment करते हैं, pointers को decrement करते हैं, so that the next consecutive value तक हम लोग पहुंच पाए, right? Okay, ये pointer arithmetic को ध्यान से आपके मशीन के ऊपर भी करके देखना है, and what we are going to work on is अभी conclusion में इसके रूल को summarize करके हम लोग एक बार देखने वाले हैं। So इसके समरी में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पॉइंटर अरिथमेटिक इज फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इलीगल, 2 पॉइंटर्स को ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाइंग अ पॉइंटर विद अ नंबर इज नॉट अलाउड, dividing a pointer with the number is not allowed, right? Okay, and a pointer when incremented then it always points to the next elements of its type, right? For example, अगर आप कैरेक्टर पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करते हो तो इट गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1, इफ यू आर इंक्रीमेंटिंग द फ्लोट पॉइंटर बाय 1 इट गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 4, क्योंकि उसको उसके टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना है। सो ये जुड़ा हुआ है उस डेटा टाइप को कितने मेमोरी का रिक्वायरमेंट है उससे, राइट? तो इसी पॉइंटर अरिथमेटिक को यूज करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने वाले हैं, एंड दैट इज ट्रैवर्सल ऑफ अरेज विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। So that's it for this session. I hope you understood this amazing aspects of pointer arithmetic. So that's it for this session. I hope you understood the amazing aspects of this pointer arithmetic. So let's go on using pointer arithmetic for handling arrays. Thanks for the watching. Keep doing programming. Thank you very much.